From where do Hedda and George return when the play opens? जब प्ले शुरू होता है तो हेडा और जॉर्ज कहाँ से वापस आते हैं? हेडा एंड जॉर्ज रिटर्न फ्रॉम देयर 6 month long बट बोरिंग हनीमून व्हेन द प्ले ओपन्स। ठीक है, जब प्ले ओपन होता है तो वो अपनी 6 माह की बोरिंग लंबी और बोरिंग हनीमून से वापस आते हैं। वाइज जनरल बर्नार्ड शॉ कॉल्ड एन iconoclast. Bernard Shaw is called an iconoclast because he questioned old set traditions and custom and criticized certain beliefs. इसको iconoclast इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने पुराने पुराने जो रवायात हैं और कस्टम है उन पर सवाल किए और जो सर्टेन मखसूस बिलीफ्स हैं उन पर तनकीद की। Who says this dialogue in Arms and the Man? Arms and the Man में ये डायलॉग कौन कहता है? Soldiering, my dear ma'am, is core art of attacking mercilessly when you are strong and keeping out of harm's way when you are weak. Surges in Act 2. Why is Waiting for Godot written only in 2 acts? Waiting for Godot is only written in 2 acts because everything in this play is divided into two tramps, a pair of Lucky and Pozzo, arrival of messenger by for 2 times. Why do Vladimir and Estrogen want to commit suicide? इसका ऑलरेडी भी आंसर दिया गया है। ठीक है, अपना वक्त गुजारने के लिए वो ऐसा करने की फनी तौर पर ऐसा करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज चाहते नहीं हैं। व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ बॉन्ड प्लेज? बॉन्ड के जो प्लेज हैं उनका मेजर थीम में बॉन्ड प्लेज आर मैन एबिलिटी टू सर्वाइव द वर्स्ट एज वेल एज अपहिल टास्क ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड। मुश्किल और तब्दील होती हुई दुनिया के मुश्किल कामों को और बदतरीन चीज़ों में अंदर रहने की सलाहियत पैदा करना। व्हाट डज सी इन सी सिंबलाइज ऑलरेडी आंसर्ड। गिव अ ब्रीफ एस्टिमेट ऑफ यशा का मुख्तलिफ उसका जो है वो एस्टिमेट पेश करें। यशा इज द मेल सर्वेंट ऑफ मैडम रेनविस्की एंड ग्रैंडसन ऑफ फिर्ज। यशा फिर्ज की ग्रैंडसन है, बड़ा बेटा है और मैडम रेनविस्की की सर्वेंट है। He travels to France but returns back to Russia with Madame Renwiske. वो फ्रांस का सफ़र करती है मगर फिर मैडम रेनविस्के के साथ फ्रांस वापस आ जाती है। His turn toward physical pleasure and साइगर उसको साइगर और फिजिकल प्लेजर्स की तरफ ड्रान किया गया है, उसको बनाया गया, खींचा गया। Who does purchase cherry orchard? What does it signify? Lopakhin purchases the cherry orchard. His purchasing signifies the rise of middle class worker after the revolution while the fall of aristocratic class. Mention Hedda life before and after marriage. Hedda life before marriage was an adventurous affair of time. She and Lovborg used to chat with each other when General Gabler was reading a newspaper. Her life after the marriage was marred with boredom as she could not enjoy bookish company of her husband. Why is Hedda called a female Hamlet in Hedda Gabler? हेडा क्यों हेडा को हेडा गैबलर में फीमेल हैमलेट क्यों कहा जाता है? हेडा गैबलर is called female Hamlet because she is caught in almost the same circumstances as a Danish prince. She cannot lead a life of independence because her society prohibits doing manly work. She is forced to marry a person out of her own necessity. How does Act 1 of Arms and the Man introduce the theme of play? Act 1 of Arms and the Man mainly introduces us to theme of war and its true nature throughout the defeat of Serbian army and fugitive hurling in Dina boredom
bedroom to save his life. Fugitive कहते हैं अपने आप को छुपाना. Who says in arms and the men act as if you expected to have your own way, not as if you expect to be ordered. Nicola. What does Lucky dance? What does Lucky dance in a net symbolize? When Lucky dances on the command of his master Pozo in Act 1, Pozo says that Lucky dance as if he is entangled in a net. जैसे कि वो एक जाल में फंस गया, entangle फंस जाना. Thus इस तरह Lucky dance symbolizes the entanglement of entanglement in life caused by some circumstances. What benefit does Pozo get from his blindness? ठीक है, अपनी जो है वो अंधापन से पोजो क्या फायदा हासिल करता है. पोजो hears life from a new angle and sees how meaninglessness life repeats its cycle every day. ठीक है, वो देखते हैं कि किस तरह बेमकसद जिंदगी अपने साइकिल को हर दिन रिपीट करती है, दोहराती है. Who says in the cherry orchard, well, goodbye, old man, it is time to get. Here we stand, pulling one another noses, but life goes its own way all the time. Lopakhin. What did Anya do in Paris? This question shall be answered after a thorough reading of the play. Differentiate between theme and motive. Theme is a prominent message of literary piece of writing, while a motive is an idea or a repeating pattern of certain ideas or images to illustrate certain theme. Give a pen picture of rose with reference to C. सी के हवाले से रोज की पिक्चर को बयान करें. इन द प्ले रोज इज अ पेल एंड टायर्ड. Describe the physical appearance of Hedda. Already discussed. Question 2 we discuss. Question number 3. What is Raina nickname for Bluntschli? Bluntschli के लिए Raina क्या nickname रखती है? Raina call Bluntschli with the nickname of chocolate cream soldiers. Chocolate cream खाने वाले सिपाही. In what ways is the Captain Bluntschli an anti-hero? ठीक है, किस तरह किन तरीकों से या किस तरह कैप्टन ब्लंटशली एक हीरो के खिलाफ है. ब्लंटशली एंटी हीरो है क्योंकि उसकी एंटी हीरोइक ट्रेड्स इन कैरेक्टर की वजह से. टाइपिकल हीरोज आर यूजुअली पोर्ट्रेड एज अ ब्रेव कर्जेस एंड ऑफ हायर रैंक. आमतौर पर ज़्यादातर हीरो उनकी बहादुरी, दिलेरी और जंग के जज्बे की वजह से रखा जाता है. But Captain Brunchly is an outwardly brawny or coward person and belongs to a noticeable lower class. Discuss Beckett's attitude toward hope in Waiting for Godot. Beckett's attitude toward hope is like hope against hope. To simply put, he is not hoping for hope. This play is about a consistent waiting for someone who will not come. ऐसी चीज़ों के बारे में वेट करना जो कभी भी वाक़या नहीं होंगी. What is the function of boy in waiting for God? Function of boy in waiting for God is to give a glimpse of hope for Sturgeon and Vladimir concerning the arrival of God. The boy serves as a messenger in between God and the pair of tramps. ठीक है, बच्चा उनके लिए उम्मीद की अलामत होता है जो बताता है कि गोडोट कभी नहीं आएगा. What is Varia relation to Mrs. Renwiske? Varia is the adopted daughter of Mrs. Renwiske. ये उसकी सुतीली बच्ची है. Why does Trofimov not accept Lopakhin money? ठीक है, Trofimov Lopakhin की मनी को क्यों वह एक्सेप्ट नहीं करता, उसके पैसे को क्यों एक्सेप्ट नहीं करता. Trofimov does not accept money from Lopakhin to retain his freedom as according to him. अपने मुताबिक अपनी आज़ादी को गुजारने के लिए. It is money that enslave people to people. ये पैसा ही है जो इंसानों को इंसानों का गुलाम बना देता है. What are the विकार व्यूज अबाउट कोलन? कोलन के बारे में विकार के क्या व्यूज हैं? विकार थॉट दैट ही वाज बीइंग समन्ड बाय गैब्राइल. उसको गैब्राइल के जरिए बुलाया जा रहा है. हाउ डज बॉन्ड क्रिटिसाइज रिलीजन विद रिगार्ड टू एरिस्टोक्रेटिक राव?
एरिस्टोक्रेटिक क्लास के हवाले से बॉन्ड किस तरह मजहब पर तनकीद करता है। Brown criticizes religion through the character of Mr. Rafi, who attach an ostensive importance to religious rites but does not care about the ones who are in need of money like a Mr. Hash. मिस्टर हैश की तरह के लोगों की वो कोई भी केयर नहीं करता जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन वो अपने आप को फर्जी तौर पर एक मजहबी लोगों के साथ अटैच करता है। For what physical feature does Hada not like Thea? Hada does not like Thea because of her abundant hair. Hada often shows her desire to burn Thea hair. In what extraordinary way does Hada greet Judge Brack when he comes to tell about the purchase of a villa? Hada points her pistol at a Brack and shoots at the sky, scaring Brack. Scaring कहते हैं परेशान करना। How does Shaw employ Arnie in opening lines of War Man the Man? Shaw opens the play with the line from Virgil epic Aeneid of arms and the man I sing while Virgil is a glorifying verb. Shaw is using this stitch to ridicule romantic ideas about war in his present play. How did Petkoff Petkoff become a major? Petkoff major किस तरह बना? Petkoff become major on account of the wealth he possessed, not because he was a good at warfare. वो अपने warfare की वजह से नहीं, बल्कि अपने जो है वो उसकी जो करेक्टर थी, उसकी जो अपनी दौलत की वजह से जो कैप्टन बन गया, ना कि अपनी जो है वो जंगी महारत की वजह से। Why is waiting for Godot in 2x? Already answered. Explain the idea of pairing. Throughout the pairing already answered. What is the metaphoric significance of sea in the sea? In the sea has been used as a metaphor of reduction as a challenge of human survival in every play. Why does Mrs. Rafi arrange play? Mrs. Rafi arrange a play in order to satisfy her aristocratic feeling as well as to collect charity for coast guards. कोस्ट गार्ड्स के लिए चैरिटी को कलेक्ट करने के लिए और अपनी एरिस्टोक्रेटिक फीलिंग है उसको जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए वो जो है वो प्ले का एक अरेंज करती है। What does Charlotte character represent in Cherry Arthur? Character of Charlotta represents the free thinking of common people who holds a firm belief in how Russia is over orchard. How is Dunyasha and especially Arnic character? Dunyasha is Arnic in a way she longs for becoming a member of aristocratic class. वो एक aristocratic class का member बनने की ख्वाहिश करती है and वे she powders herself to look like an aristocratic और वो तरीका जिसके ज़रिए वो अपने आप को aristocratic लेडी की तरह दिखने की कोशिश करती है। ये था जी एम इंग्लिश पार्ट 2 मॉडर्न ड्रामा का शॉर्ट क्वेश्चन एंड उनके आंसर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और महफूज भी। आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है एम इंग्लिश पार्ट 2 मॉडर्न ड्रामा। ठीक है, एम इंग्लिश पार्ट 2 मॉडर्न ड्रामा पेपर नंबर 2। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर फ्रॉम सरगोदा यूनिवर्सिटी पास पेपर। ठीक है, एम इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 2। ठीक है, इसके आपके साथ पिछले 5 साल के शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर जो सरगोदा यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट हुए हैं आए हैं वो डिस्कस करूँगा। 2015 से लेके 2021 तक 5-6 जो पास्ट पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्क्राइब द फिजिकल पर्सनैलिटी ऑफ हेडा गैबलर। हेडा हैज़ अ पेल आइज, उसकी पीली आंखें हैं। वाइल शी लेक्स एन अबंडेंस ऑफ हेयर, मगर उसके बालों की कमी है।
What is the attitude of Hedda Gabler toward other female character in play? Already answered. What changes take place in physical personality of Pozo and Lucky in Act 2? ठीक है, कहते हैं कि पोजो और लकी की एक्ट 2 में उनकी शख्सियत फिजिकल पर्सनैलिटीज में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। पोजो बर्न्स ब्लाइंड टर्न्स ब्लाइंड, पोजो अंधा हो जाता है एंड लकी लूजेस स्पीच इन एक्ट 2। पोजो जो है वो ब्लाइंड हो जाता है और लकी जो है वो अपनी बात करना खो बैठता है। डिफाइन ट्रेजिक कॉमेडी गिविंग टू एग्जांपल ऑफ दिस पार्टिकुलर जेनर। ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी एक ऐसे लिटरेचर को कहते हैं, ऐसे जेनर को कहते हैं जिसमें एक ऐसा वर्क हो जिसमें ट्रेजिडी भी के भी एलिमेंट मौजूद और कॉमेडी के भी एलिमेंट मौजूद हों। ट्रेजिक कॉमेडी इज अ प्ले इन विच कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स आर वोवन इन अ प्ले। ठीक है, उसमें ट्रेजिक कॉमेडी के एलिमेंट मौजूद है। वेटिंग फॉर अ गोडोट, सैमुअल बेकट, चेरी आर्चर्ड बाय एंटन चेखव। उसके अलावा द द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वारिया टू मिसिस रेनविस्के? ऑलरेडी आंसर्ड बिलो। व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ सर्जियस अबाउट आर्ट फॉर सोल्जरिंग? ठीक है, कहते हैं कि सोल्जरिंग के फन के बारे में सर्जियस की ओपिनियन क्या है। अकॉर्डिंग टू सर्जियस, सोल्जरिंग इज अ कोड आर्ट ऑफ अटैकिंग मर्सीलेसली। ठीक है, सर्जियस के मुताबिक जो फौजियों का एक शोबा है वो एक बुजदली का फन है। ठीक है, मर्सीलेसली अटैकिंग व्हेन एन आर्मी इज एन एडवांटेजियस प्लेस, जब एक आर्मी एक फ़ायदेमंद जगह होती है। वाइल हाइडिंग फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए छुपाते हुए। व्हेन अदर आर्मीज पावरफुल, जब दूसरी आर्मी मजबूत होती है। ठीक है, कहता है कि जब दूसरी आर्मी मजबूत होती है तो तब अपने आप को छुपाते हुए, लेकिन जब दूसरी कमज़ोर होती थी अपने आप को मजबूत और फ़ायदेमंद तस्वर करते हुए। वेयर डज ब्लंटशली हाइड हिमसेल्फ? ब्लंटशली अपने आप को कहाँ छुपाता है? Bluntschli hides himself in the room of Raina, who is daughter of his enemy Major. Bluntschli रायना के ब्लंटशली खुद को रायना के एक कमरे में छुपा लेता है जो एनमी यानी कि एक दुश्मन मेजर की अपनी बेटी होती है। Why does Vladimir and Estrogen want to commit suicide? The ट्रैप्स कहते हैं मसखड़े, आवारागर्द। वांट टू कमिट सुसाइड इन ऑर्डर टू पास द टाइम, वो वक्त को गुजारने के लिए खुदकशी करना चाहते हैं। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले सी? द सी टेक्स प्लेस इन द ईयर ऑफ 1907 ऑन द अननोन विलेज कोस्ट नियर ईस्ट एंजलिया। What is Mr. Evans? Mr. Evans is a philosophical wise of sea. At the end of play, Evans suggests that suffering is the only language to exist as a human. ठीक है, वो एंड में तजवीज़ देता है कि जो इंसान है ना वो मुसीबतों को झील कर ही जो है वो वजूद में आता है एक इंसान के तौर पर। In what two ways the theme of motherhood is introduced in Hedda Gabler? The theme of motherhood is signified through the character of Thea and Hedda. The Thea has been presented as a mother who can reconstruct her burnt child. अपने जले हुए बच्चे को दोबारा से रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकती है, उसको बेहतर कर सकती है। While Hedda has been depicted as a force to destroy children of others, हैडा को दूसरे लोगों के बच्चों को तबाह करने के लिए एक फोर्स के तौर पर डिपिक्टेड किया गया है। एंड ऑफ हर ओन, और अपने भी। बिकॉज शी डज नॉट वांट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। वाई इज हैडा सो क्रूअल टुवर्ड्स अदर फीमेल कैरेक्टर इन द प्ले? हैडा जो है वो नावल में ड्रामे में दूसरे किरदारों के बारे में इतनी क्रूअल क्यों है, जालिम क्यों है, दरिंदा क्यों है? हैड इज क्रूअल टुवर्ड्स अदर फीमेल कैरेक्टर बिकॉज ऑफ हर इनएबिलिटी टू डू मैन लाइक एक्टिविटीज, क्योंकि वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि वो मर्दों की तरह ऐसा परफॉर्म करने में
नाअहल होती है। She is jealous at the success accomplished by females character। वो फीमेल कैरेक्टर की जानब से अकम्पलिश यानी कि हासिल की गई कामयाबियों पर जो है जेलस होती है। स्पेशली ख़ास तौर पर थिया फॉर सक्सेसफुली शेपिंग अ मैन डेस्टिनी। खसूसी तौर पर थिया के लिए जो एक इंसान की मुकद्दर को शेप करने में कामयाब हो जाती है। For what class struggle does Luca passes? लूका जो है किस क्लास से स्ट्रगल करती है। द प्रॉब्लम लूका इज दैट शी वांट टू क्लाइंब सोशल लेडर फ्रॉम वर्किंग क्लास टू लेट क्लास। लूका की प्रॉब्लम ये है कि वो वर्किंग क्लास से लेट क्लास की तरफ सोशल लेडर यानी कि माशरती सीढ़ी पर चढ़ना चाहती है। लोका डज नॉट वांट टू रिमेन अ सर्वेंट थ्रू आउट हर लाइफ। लोका सारी जिंदगी एक मुलाजमा नहीं रहना चाहती है। दस इस तरह हर स्ट्रगल इज टू गेट आउट ऑफ सर्वेंट क्लास इनटू अ रिस्पेक्टेबल अपर क्लास। उसकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो सर्वेंट क्लास से निकल कर अपर क्लास में दाखिल होना है। व्हाट इज़ प्राइमरली एंटी रोमांटिक इन आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, एंटी रोमांटिक आर्म्स एंड द मैन में एंटी रोमांटिक इब्तदाई तौर पर क्या है। व्हाट इज प्राइमरली एन एंटी रोमांटिक थीम इन आर्म्स एंड मैन। ठीक है, कहता है कि जंग एंटी रोमांटिक थीम है आर्म्स एंड द मैन में। इब्तदाई तौर पर शाह डिबंक्स कहते हैं डांटना, द रोमांटिक तनकीद करना, रोमांटिक आइडियाज अबाउट वर्थ थ्रू माउथ पीस ऑफ ब्लंटली डेट एवरी soldiers is afraid of death and he can go to extremes to save his life। हर सिपाही बुज़दिल होता है, वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कंपेयर द थीमेटिक एंड स्ट्रक्चर यूनिटी इन वेटिंग फॉर अ गोडोट। थीमेटिक और स्ट्रक्चर यूनिटी को जो है वो इसमें कंपेयर करें। थीमेटिक यूनिटी इन वेटिंग फॉर गोडोट वेल लाइज इन वेटिंग फॉर गोडोट while structural unity of this play has been demonstrated through the pair of characters and choices they have been given. For instance, the pair of traps is given the choice to eat a turnip or a carrot। ठीक है, टर्निप और कैरेट, वो गोंगलू और गाजर खा रहे थे। उनको ये चॉइस दी गई कि आप दोनों में से जो मर्जी खा सकते हैं। How is carrot used as a symbol in waiting for a Godot? वेटिंग फॉर गॉड में जो है वो कैरेट को एक गाजर को सिंबल के तौर पर बयान किया गया, इस्तेमाल किया गया। किस तरह। कैरेट हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ लाइफ एज एस्ट्रोजन पुट्स इट, द मोर यू ईट द मोर वर्स इट गेट्स। जितना आप इसको खाते हैं आपकी ज़िंदगी उतनी ख़राब होती है। व्हाट डज फॉलिंग ऑफ एक्सिस सिग्निफाई इन चेरी ऑर्चर्ड। चेरी ऑर्चर्ड में कुल्हाड़े का गिरना क्या ज़ाहिर करता है। स्ट्राइकिंग ऑफ एक्स इन एक्ट for serve as a symbolic significance of fall of aristocratic class in Russia and end of cherry orchard in a literal sense। Define naturalism. Naturalism is a literary movement that sprang out of another literary movement, realism। Naturalists believed that humans were fighting a constant battle of survival against their social customs, society and environment in which they had been living। ठीक है, ये नेचुरलिज्म एक ऐसी जो है वो एक तहरीक है जिसमें सारे के सारे जो राइटर है वो नेचर पे जो है वो अपना लिटरेचर लिखते हैं। ठीक है, ये ऐसी जो एक मूवमेंट है जो रियलिज्म पे बेस होती है। ब्रीफली इंट्रोड्यूस एपिक थिएटर। Epic theater was also a dramatic movement that took place in 20th century। Epic theater does not relate to scale of play, but it rather emphasizes the presentation of world that is identical to actual political and social world of the ideas। Mention the major fears of Mrs. Rafi। Mrs. Rafi के जो बड़े खौफ हैं वो बयान करें।
The major fear of Mrs. Ruffy is losing her authority as soon as she grows old. ठीक है, उसका सबसे बड़ा ये खौफ यही है कि जब वो बूढ़ी होगी तो वो अपनी अथॉरिटी खो बैठेगी. What is the importance of home in Hedda Gabler? Importance of home in Hedda Gabler is felt differently by different characters. Hedda feels as if she is trapped forever. वो ऐसा समझती है कि जैसा वो हमेशा के लिए फंस गई है. And she does not like the house Testman has bought for her. वो उस घर को पसंद नहीं करती जो टेस्टमैन ने उसके लिए खरीदा है. While Testman thinks that it is their dream house, मगर टेस सोचता है कि ये उनके उनके ख्वाबों का घर है. Why does जज ब्रैक never marry? जज ब्रेक क्यों कभी शादी नहीं करता? Judge Brake does not marry in a play because she does not want to engage himself in responsibilities. Engage कहते हैं अपने आप को पिंजरे में फंसाना. वो अपने आप को जिम्मेदारियों के कैद में नहीं फंसाना चाहता है. That would eliminate his freedom. उसकी आज़ादी को ख़त्म कर देगी. The second reason might be his inclination to be good. दूसरा जो उसका जो अच्छाई की तरफ रुझान है. Trusted friend, एक पुरस्मार दोस्त of the one who are married. उनका जो शादीशुदा है. What is naturalism? Already answered. Why does Raina prefer Brunchly over Sergius? Raina जो है वो सर्जिया पर ब्रंशली को क्यों प्रेफर करती है? राना प्रेफर ब्रंशली ओवर द सर्जियस. राना सर्जियस पर ब्लंटशली को तरजीह देती है बिकॉज ऑफ हिज प्रैक्टिकल थॉट्स अबाउट लव एंड वर्क. मोहब्बत और जंग के बारे में उसके अपने प्रैक्टिकल ख्यालात की वजह से. अनलाइक सर्जियस के बरक्स ब्लंटशली डज नॉट चेंज हिज सेंटर ऑफ लव. सर्जियस के बरक्स ब्लंटशली मोहब्बत के अपने सेंटर को चेंज नहीं करता है. डैट इज़ व्हाट इम्प्रेसिव रायना रिगार्डिंग ब्लंटशली. ये चीज़ है जो रायना को ब्लंटशली के मुतल्लिका इम्प्रेस करती है, मुतासर करती है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन द वेटिंग फॉर अ गोडोट? इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन दिस प्ले मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक शख्स से दूसरे शख्स में ताल्लुक तक ये मुख्तलिफ है. ट्री सर्व as an identification mark for the Trajan and Vladimir to wait for Godot. उनके लिए एक आइडेंटिफिकेशन शनाख्त का काम करता है. while the tree also serve as a symbol for peace and its growth is not noticed by tramps, so it is difficult to interpret tree as a symbol of hope in this play. Why there is no climax in Waiting for Godot? Waiting for Godot में climax क्यों नहीं है? There is no climax in Waiting for Godot because the main action is yet to be performed by the Godot. अभी तक इसमें मेन फंक्शन जो है एक्शन जो है परफॉर्म करना है Godot ने. Who does not arrive जो नहीं आता. Another reason behind this might be Beckett attention towards that life has no climax. बेकट सैमुअल बेकट का इसके अलावा और मकसद ये हो सकता है कि वो इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि ज़िंदगी का कोई क्लाइमैक्स नहीं होता. Who can be called a spokesman of Chekhov in Cherry Orchard and why? ठीक है, चेरी ऑर्चर्ड में चेखव के स्पोक्समैन किसको कहा जा सकता है और क्यों? ट्रोफिमव Trophimus is a spokesman of Chekhov in his Cherry Orchard because he alludes to significance of changes take place in Cherry Orchard or in Russia symbolically. What is the main character flaw in Trofimov in Cherry Orchard? Trofimov noticeable flaw in his personality, his lack of sensitive feeling. उसके जो है वो हसास जज्बात की एहसासात की कमी है. Under the strong intoxication of new ideology emerging in Russia, रशिया में नई आइडियोलॉजी जो मर्जिंग हो रही है उसके नशे के तहत he cannot sense from what grief Madam Ranviske will go through after losing the access to her orchard. वो ये बात को नहीं फील रहा कि
उसको वो जब इस चीज़ को हासिल कर लेगा तो मैडम रेनविस्की जो है किस मुसीबत से दो चार होगी। हाउ डू विली एंड रोज क्रिएट देयर personal maturity? both the both the couple create their personal maturity by learning solution to problem that are being faced by their society. Briefly describe the bond concept of violence. Bond suggests that violence is necessary for human to shape their society. इंसानों को अपने माशरे को शेप करने के लिए उसको बनाने के लिए तशद्दुद बहुत ज़रूरी है. विदाउट वायलेंस दे हैव नो फ्यूचर. उनका कोई फ्यूचर नहीं है. डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर ऑफ हेडा गैबलर. हेडा गैबलर की फिजिकल फीचर को डिस्क्राइब करें. द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ हेडा गैबलर हेड्स up to her personality as a cold-hearted woman. Hedda is a woman of face and figure, show refinement and distinction. Her complexion is pale and opaque. Her steel grey eyes express a cold, unruffled response. Her hair is of agreeable brown but not practically abundant.